Assalamualaikum everyone, how are you all? Walaikum Assalam. It will be great if I can see some of your faces, by the way. We know most of you. Majority of you are from Code Girls. That's wonderful to see. So, Bismillahirrahmanirrahim. This is Samana Hassan, as you all know me. Today, in particular, we are doing a pre-TechFest workshop with regard to preparing the students for the competition, and more importantly, more in focus is the hackathon preparation. So, what we expect out of this session today is that जो participants हैं वो अपनी presentation skills को polish कर सकेंगे. But before I dive into that, let me tell you a bit about Code Girls and what is this event TechFest, and a little about our speaker today, our workshop facilitator today, which is Sanam Khan. So we're starting with CG, Code Girls. Code Girls is a platform जहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि वो तमाम बच्चियाँ, वो तमाम ख़वातीन जिनको एक्सेस नहीं मिलता towards learning, digital skills, more importantly, technical skills, coding skills, वो यहाँ पे आके एक comfortable way में coding skills सीख सकें। और जो एक gap है academia और job market के अंदर technical skills के हवाले से, IT skills के हवाले से, उनको हम bridge कर सकें। And the response has been tremendous throughout. बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी बच्चियाँ जो कोड गर्ल्स बूट कैंप से क्वालिफाई करके निकलती हैं, माशाल्लाह उनको जॉब मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। एंड हमारी कोशिश ये होती है कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी जो कोर स्किल्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जाए। एंड दिस इज़ व्हाट दिस टेक फेस्ट इज़ ऑल अबाउट। So on one hand, we have these competitions which are purely technical, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, जिसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, जिसमें UI UX डेवलपमेंट है, और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कहना उसको ज़्यादा बेहतर होगा, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव अ हैकाथॉन which is primarily focused on asking you people, the participants, what you think can be solutions to the challenges which women in Pakistan face more widely. और उन challenges को किस तरह से हम resolve कर सकते हैं, उसके लिए आपके ख्याल में क्या एक solution हो सकता है, उसका क्या business plan हो सकता है. So giving you a platform where you can, make your voice heard before a number of companies, before a number of people from academia, जहाँ से आपकी आवाज़ आगे भी जा सकती है. So to be able to present your idea in the right way, to be able to pitch your solution in the right way, you obviously need the right presentation skills. And that's where Ms. Sanam Khan is going to help us today. She is a senior project manager at Tempers. She has multiple years of experience on her palette. और उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि हर effective communication workshops have been a major, famously known at Code Girls, तो ये गलत नहीं होगा। हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम सनम खान को जो है वो effective communication के लिए endorse करते हैं, बुलाते हैं। उसके साथ ही साथ her background has been a multitude of different things. So I'll ask her to explain it herself. How are you, Sanam? All right. Hi, Samana. I'm pretty good. Thank you so much for such kind words. No, it wasn't kind at all. It wasn't well put together at all, I must say. But you have been kind and generous enough कि आप हमेशा एक ही बार कहने के ऊपर हमारे लिए time निकाल देती हैं. I can see that you have a busy schedule there. So I'm not going to take more time. I'll leave the floor to you, but I'll just say कि अगर किसी participant को कोई query है regarding hackathon का process क्या होगा, या इसके अंदर in particular, things related to the event, you can stay back in the meeting. I'll answer your queries at the end, or we can, obviously you have the number. It's everywhere on the form, on the social media. You can give me a call. You can drop a WhatsApp message. I can answer you over there also.
So over to you, Sanam. Thank you so much. Assalamu alaikum. I think we can get started. Just give me one quick moment so that I can pull off my slides. Sure. Okay. All right. And I want to share my screen as well. All right. Let me know if my screen is visible. Yes, it is. Okay. Perfect. All right. So before we get started, Samana has already introduced me. This is Sanam Khan. My further introduction, we'll talk about it a bit later. But for now, just know me as Sanam Khan. I just don't want to intimidate anyone, to be honest. I just want to start it on the right. To get started, let's just set some ground rules for these 1 hour, 1 hour and 15 minutes we're going to spend together. So, um, first rule is it's going to be interactive. So I want every one of you to kind of unmute yourself whenever interaction is needed. I really wish if I could see your faces. That would be really amazing. Okay, when you can see people, you know, okay, you're going in the right direction or not. People are getting bored or not. If we have to change the strategy and stuff like that. So it would be great if I could see your faces. I trust me, I won't mind if you're taking it from home, from your mobile. If you're not dressed up well, that's fine. I mean, we take meetings like that. So trust me, I'm not gonna judge any one of you. So that is one more ground rule that we're gonna set over here. Apart from that, so question answers. If you have any questions on anything that I am explaining right here, so I would really appreciate if you can just raise your hand, kind of drop text, and stop me then and there. Just don't kind of hesitate in asking questions. So the more you ask, the more information. Because obviously, just um, compile so much so in these 10, 11 slides. So um, the more you'll ask, I'll be able to answer you in a better way. And the last rule is please ignore these notifications that are coming in. I mean, if you're able to see that from Slack and other. I tried to make sure it just एक ही screen share हो, but अगर आप, if you can see the notifications that are coming in from Slack or any other communication medium, so just ignore that and pardon me for it. Okay, so these were just a couple of things I wanted to state before we get started with our presentation. Um, okay, so today we're gonna talk about how uh, a presentation that that has a lasting, that lets you engage your audience, that helps you, you know, convey your message in a better way, and stuff like that. So उस चीज के लिए I thought of different templates, to be honest, before coming over here. I just finished with this one like 5 minutes before this call. This is an honest statement, because I was just looking for certain things that I could work on. Because obviously presentation की बात हो रही है, तो एक अच्छी presentation, एक ऐसी presentation जो कि लोगों को याद है. I came up with this funky thing. I never did this before, so this is the first time. I would need your feedback towards the end of the presentation. If it looked nice, not nice, would be better. So yeah, open for feedback, by the way. So let's get started. That's what we are here for. How to give a presentation that's effective. So we'll start with uh, what's inside, what we're gonna, how we're gonna spend our one and 15 minutes, next 1 hour and 15 minutes. So we're talking about me. Um, I'm a self-obsessed person. No, I'm just kidding. Um, so I'll be just sharing some credentials of mine. Though Samana has already highlighted a couple of the items that I'm doing, but I just really want to share what I'm doing, where I'm from, and how I reached to where I am.
Then we'll talk about some of the key elements that will help you become a master presenter. And I'll share my secret recipe. Obviously, I don't share it with anyone so far. So I'm trying it for the first time and I hope be beneficial for you. So then the last thing, the last item that we'll be talking about is things to remember. Some key items that you should remember. And in the last, we'll have a Q&A session. Though you can ask me question anytime during the presentation as well. So let's just get started um, with our first phase, which is you guys get to know me and I get to know you. I'll be asking you about yourselves as well, so just be prepared for it. Uh, Well, I am a senior project manager at Pearls. I am a developer as well. I started off my career as a PHP developer back in 2009. Apart from that, since 2011, I've been writing. I've been writing content, product descriptions as well. I mean, anything and everything. So I'm writing my own novel. Not, I mean, not writing right now, but yeah, I started off a couple of years back. Just every day, I keep thinking, कि कभी ना कभी मेरे पास time आएगा and I'll kind of complete the plot that I created way back. So I'm a writer as well. I help companies with agile implementation. Because I've worked in both worlds. Waterfall mindset में भी हमने काम किया है उसके बाद we also worked in the agile mindset. So it was a big shift from I mean the two worlds. So I kind of did some certification in agile, and now I'm helping the organizations, the one that I'm working with, and other on the consultancy basis. So I provide a roadmap uh, for the transformation for different organizations. So that's what I do. Apart from that, I also help companies in process improvements, may it be delivery, service delivery processes, may it be production processes, engineering processes. So yeah, I'm kind of involved in that. So that's what I do. At least that's what I think I do. But what I exactly do, well, I mentor people. That's what I exactly do. Those were my credentials professionally, क्योंकि के लिए करना पड़ता है. I mean, that's what I do for a living. But apart from that, what I exactly do is I love mentoring people. For me, the purpose of my life is to leave a legacy behind. I just really want grown people their maximum potential so that they can become the next leaders and they can do way better than me. So I've been teaching since 2004. Since then, I've been teaching to different levels. I started with Montessori's, then intermediate. Then now these days I'm teaching in universities. So I'm teaching in Chennai University. I'm also part of Extreme Commerce, uh, conducting courses over there, and I've also given some courses in ICRA. So I've been teaching and mentoring people since that, and I love. Apart from that, I run a community for project managers because project manager for about 11 years now. Um, and overall, I have 14 years of experience just in the IT industry. So I've learned one thing during these past 11 years that project management is a thankless companies who want them, have them wear multiple hats, let them work tirelessly, but at the end of the day, it's a thankless job. They don't consider project managers. Even in most of the companies that I've worked with, companies they take on delivery sports. So केस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा frustration, less connectivity and stuff like that. So इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी आती रहती हैं. So I run a community for them that we can
safe environment to get things out, help each other building their careers and things like that. And the name of that community is PPMP Official. You can find it on Facebook. I'm not active on that these days, but yeah, you can do that. You go and find it. Yes, Samana, you want to say something? Actually, Sanam, we lose you every while in a bit, you know. आपकी audio जो है ना वो बीच में से miss हो जाती है. Okay, I am not sure why it's happening. Just give me a moment. Let me Yeah, check my sure. internet Yeah, sure. connectivity. Yeah, sure. Take your time. Thank you. There's probably a lag in internet on your side. Right, I tried to switch. I hope it's better now. If it's Yes, not, just let me know. Okay. yes, it's much better. It's much better. Okay, great. So yeah, so I was just saying, I run a community for project managers, current project managers, and those who are aspiring project managers, so they can also join the community. Apart from that, I love to travel and experience the world. So for me, destination is nothing. The journey matters. And last, but the most important thing, I love my 3-year-old. So that's what I actually do, apart from what I do for a living. So this is a bit about me, and I would really love to know the people I'm interacting with. So I'll start. I would really appreciate if you can introduce yourselves. I'll start with Neha Fatima. If you could just introduce yourself to all of us. Mm, am I audible? Hello, girls. It'll be nice if we can have some of you talk today. It'll be a nice, you know, warm up for the actual event. You probably need to present your projects or your, you know, hackathon idea. How about we go with this in the middle, towards the middle of the session, Sana? Yeah, sure, we can do that. So yeah, but I would still love to hear the voices, at least if you can't open Yeah, your yeah, yeah. cameras, That would be nice. That because would be nice. yeah, because that's what we are here for. मुझे lecture नहीं देना था. मुझे बिल्कुल बिल्कुल. feel करना है कि yeah, I'm talking to people. So I would really appreciate अगर आप लोग अपने whenever it's feasible for you, you can just unmute yourself and kind of contribute in the discussion that we are having right now. Okay, so that is me. I think it's a lot about me. So let's just move forward to what we are here for. How to become a master presenter. Well, um, have you guys given any presentation before? I mean, art presentation or anything before? I mean, if you cannot speak, you can also write in the chat. No? Or okay, so I got one response. Thank you. In universities. Thank you, ma'am. Yes, please do speak up. Okay, that's Samana. Anyone else who has, just yes, I have given presentations to students. That's great. Yes, ma'am. In university, that's great. That's amazing to know that you guys have been through it. When you're giving the presentation, what's
your biggest fear? Or if audience, okay. Audiences, okay. Anyone else? It's the audience. Okay. All right. So that's great. I mean, then the question is, when you're giving a presentation, what's your biggest fear? What scares you a lot when you before giving presentation? What scares you a lot? Confidence. Okay, we'll take one more if someone wants to share. All right, just forget about it. So majorly, I think you are people interested in what I'm saying. Yes, that is correct. That's exactly what I'm feeling right now. Even if you guys are interested in what I am saying, that's my fear in this very moment. So thank you for sharing this in Inshara, if I'm pronouncing it well. So yes, that so yeah, these are very, very very thank you so much. My voice is not clear. Okay, is it because of the internet or muffled? Samana, can you tell me my voice is muffled or it's No, your shaking? voice is fine. I think there's a lag because at some point we just lose you. Okay, I'm not sure. So that's why I don't like these online sessions always, kind of It's a surprise, these right? issues. Yeah, yeah. मैंने आने let's से पहले अपना let's इंटरनेट enjoy चेक किया this. था. Let's enjoy this. No, However, this is going, it's just us. And although we always try and have this professional thing on, but हम जहाँ पे एक तैयारी कर रहे हैं, we're trying to prepare the students. This is how it is. Sometimes resources just ditch us, so we yeah. need to let go of it and go in the flow and have fun. Thank you so much, Amana. All right. So, yeah, to be honest, the fear that you have, it is a really very valid fear. I mean, I till today, after giving so, I mean, after teaching since a long time, being in the industry as a professional since a long time, um, giving public speaking sessions, hosting events, ये सब कुछ करने के बाद भी आज इस presentation में आज इस workshop में आने से पहले भी I was nervous. I was having butterflies in my stomach that how is it's gonna go. I was nervous कि मेरी presentation सही चलेगी या नहीं चलेगी. Um, how do I engage people, who they are, where they're coming from, what their mindset is, what they want to listen or not. So that's exactly why when you want to present something. So in universities, it's a little easier because you know कि आपके classmates सामने बैठे हुए होंगे. अगर आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में अपनी ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, you still know कि आपके टीम मेंबर्स सामने बैठे हुए होंगे. Then when you are presenting people who are strangers, that is difficult. When or Spay on top of that, like Samana mentioned, that you guys need to pitch your ideas. Guys need to sell your ideas to the judges who are unknown. You're showing them. So first of all, तो fair ही यही होगा कि एक तो unknown के सामने हम जा रहे हैं. Okay, all right. Let me just repeat it. Not sure why it's happening. All right. So yes, this is one most important fear. Yeah, one most a common fear कि आपको अपने audiences का पता नहीं है. So how are you gonna interact with them? ठीक है.
or especially when you're talking about the scenarios which you guys will be in, जहाँ पर आपको अपने ideas, अपने visions, अपने projects, judges को pitch करने होंगे, उन judges को जिनको शायद आप जानते नहीं हैं, को अपना vision दिखाना होगा. So it's gonna be very difficult. Yes, I agree. तो उसका सबसे पहला जो aspect होता है to master that skill or become master presenter. The first thing, there are a couple of things, but there are a couple of items जो कि आप लोगों को जहन में रखने चाहिए before you go into the presentation. So to become great at presenting, you need, so there are some prerequisites, then there is something in between that we'll talk about, and then there is something that you need to remember that we'll talk about in the last. Present technically material होना चाहिए. Material भी नहीं होगा तो present क्या करें? अपना idea, अपना vision आपने सोचा हुआ तो है, लेकिन Excuse उसको me, ma'am, map. we cannot hear you. Okay, how about I stop my video? Is it any better now? Now it's audible. Okay, perfect. So I'm stopping my video Yeah, so that my voice is at least there. yeah, that's great. Perfect. Thank you, Speaker. All right. So हम बात कर रहे थे. Let me just go back a little bit. पीछे जहाँ से हमने शुरुआत की थी. एक अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं. आपको हेल्प करते हैं प्रेजेंटेशन के बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं तो आपको हेल्प करती हैं इन डिलीवरिंग दैट प्रेजेंटेशन. So that's how I have divided these two, I mean, the entire mastery wala aspect into two items. Prerequisites are that you need to have, solid material that can. Am I audible? You can talk and probably we'll know. Sanam? Hello, am I audible? Am I audible now? Yeah, you're audible. Yeah.
Okay, perfect. Thank God. Oh, I have changed my internet. I hope it works. लास्ट आप लोगों ने कहाँ तक सुना है? मैं तो बस बोलते ही चले जा रही थी. This Sanam was a very good way of getting, to be able to hear the voices of these girls. जो कि बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी. I didn't get you, Samana. मैं कह रही थी सनम कि आपके ऑडियो के इशू की वजह से एटलीस्ट वी गॉट टू हियर द वॉइसेस ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स. Okay. So थोड़ा I'll I just hope that is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. Perfect. Perfect. Yes, ma'am. That's great, yeah. I could hear a lot of voices. Now I have this at least satisfaction that I'm not just talking to the wall. There are people listening to me. That's great to know. Trust me. When you know that people are listening, आपको बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड फीलिंग टू बी ऑनेस्ट. एनीवे सो आई एम नॉट श्योर हमने कहाँ तक कवर अप किया था, लेकिन आई जस्ट काइंड ऑफ I mean, दोबारा से मैं I'll revise what I was saying so that we all are on the same page before we move forward. So I did ask you guys, okay, what's the biggest fear? And a lot of people said the audience, sometimes lack of confidence. That again takes you towards the fear of audience, facing the audience. And then we spoke about, okay, what are some prerequisites that you need to present well. So uske liye I'm talking about these four items that I always follow when I am when I have some presentations coming up. May it be a professional presentation, may it be कोई workshop हो रही है तो उस पे. So I always follow these four things. These are some prerequisites that I follow. So जैसे समाना ने बताया that you guys will be presenting your ideas to in hackathons, जहाँ पर you will be talking to the strangers. So you have to be very confident on what you're selling. So ये कुछ items हैं जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये सब समझने से पहले it is very important कि presentations के जो do's होते हैं, giving a presentation के जो do's होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझ लें. Somehow आप लोगों ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को किया हुआ होगा इम्प्लीमेंट, लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ तो कंसिडर इट एज अ न्यू लर्निंग, और अगर किया हुआ है so consider it as a revision. So what I do, I map my idea first. So you have to like do the mind mapping. फौरन से presentations बना लेना is या slides बना लेना basically कि just if you have to give a presentation the first thing you do is creating a slide. No, first thing you do is you research, thorough research, क्रिएट अ माइंड मैप कि ये फ्लो होगा मेरी प्रेजेंटेशन का, ये आइटम्स हैं जिस पे मुझे बात करनी है. वंस यू हैव दैट माइंड मैप, एक फ्लो चार्ट आपके जहन में बन चुका है, पेपर पे जहन में, जिसको जिस तरह से भी फीजिबल लगता है, अगर आपके जहन में ये बन गया है, ओनली देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्लाइड डेक. डोंट just jump onto the slide deck right away. So mind map के लिए the tool that I use is फ्री माइंड एक आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन, दैट्स अवेलेबल फॉर फ्री. उसके ऊपर मैं बेसिकली माइंड मैप्स करती हूँ कि अच्छा ये मेरा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज व्हाट आई नीड टू से, दीज आर द एरियाज आई विल बी कवरिंग. सो that way it becomes very easy, and it becomes very I can complete my presentation within like a very small time period. So map your idea. And while you're doing so, just do remember that there is a 10-20 rule. The 10-20 rule says, अब दिस डिपेंड्स कि आपकी प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन क्या है, लेकिन एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए 10-20 रूल सेज कि योर प्रेजेंटेशन, a normal presentation should be around of 10 slides and should not be more than 20 minutes, specifically when you're pitching your ideas to a certain audience. क्योंकि the more
you hang on to the items, एक चीज को बार बार रिपीट करना या फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देना, तो उससे होता ये है कि आपका जो कंट्रोल होता है आपकी ऑडियंस पे वो लूज होने लगता है, लोगों की इंगेजमेंट जो है ना वो कम हो जाती है। कंसिडर योर सेल्फ एज एन ऑडियंस, जैसे अभी आप हो ऑडियंस। अगर मैं यही वर्कशॉप कोई हम 4-5 घंटे तक एक ही चीज एक रिडंडेंसी के साथ बताते रहेंगे, तो दैट विल बी अ वेरी रिडंडेंट आइटम फॉर यू एंड यू विल बी लाइक यार ये कब खत्म होगी और मैं कब घर जाऊंगी, या यार ये तो सेम चीजें हमें पता है, एक दफा में पता चल गई है, बार बार उसी चीज को रिपीट करने का क्या फायदा। तो जस्ट मेक श्योर दैट योर आइडिया इज कंसाइज, यू वर्क ऑन द स्लाइड डेक इन अ वे कि जहाँ पे आपकी स्लाइड डेक की जो जो स्लाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वही ऑडियंस को बड़ा घबराने वाला एस्पेक्ट दे देती हैं कि यार ये तो स्लाइड्स नहीं खत्म हो रही, इसमें और कितना बताएंगे। तो just make map your idea first and then create your slide deck, and make sure that when you're creating your slide deck you have the 10-20 rule in your mind, that around 10 slides to be covered within 20 minutes. So that is the first thing that as a presenter you need to take care of. The second thing that we will be talking about is keep it simple, right? Avoid too much text. So whenever there is like a lot of content in your presentations, कि मैं सब लिख दूं, सब बता दूं, एक ही स्लाइड के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दूं, सो ये ह्यूमन साइकी है, वी डोंट वांट टू रीड मच। हमें वो बातें जो हम सुनते हैं और उस बात को जब हम दोहराते हैं, तो दैट इज मोर इजियर फॉर अस टू रिमेम्बर, इंस्टेड ऑफ वी आर रीडिंग अ लॉट, वी आर रीडिंग एंड वी आर लिसनिंग एट द सेम टाइम। सो आप ऑडियंस का कंट्रोल वहीं पर खो दोगे अगर आपकी स्लाइड में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज एट द सेम टाइम दे आर रीडिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड दे आर लिसनिंग टू यू एज वेल, सो यू विल लूज द कंट्रोल। आप अपना 50% कंट्रोल जो है वो वहीं पे खो दोगे। सो जस्ट डोंट डू इट, कीप इट वेरी सिंपल। कंटेंट बहुत कम, वन लाइनर, टू लाइनर, ग्राफिकली बहुत फैंसी ना हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो कि डिस्ट्रैक्टिंग ना हो आंखों के लिए। Keep it simple with colors that are not very sharp. Like I just used one color over here in my intro that was pretty sharp, like this. So that's a don't use it. I did it because I wanted to give you guys an example. Just don't do it. When you see something red, so every color has a meaning, right? Red means in some instances it means emergency, it means danger, it means it's a very loud color. It gives your eyes a very loud impact. So use the colors, जिस स्लाइड पे आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, जिस स्लाइड पे आपको बहुत ज्यादा बोलना है, उस स्लाइड के ऊपर यूज द कलर्स दैट आर इजी ऑन योर आईज, so that the audience can actually relate to it, can have the soothing mental impact when they are reviewing you're watching your slide. So just make sure that you're using very simple colors, less content, no fancy things, but yet creative. So this is another important aspect when you're preparing for your presentation. Then the third and the most important thing is engage your audience. तो अभी हमारे पास क्योंकि हम ये चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, so this is a little difficult, a little tricky. लेकिन it would have been great अगर मैं आप सब लोगों का फेस देख के आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकती, because that's very important to engage your audience. I right now, since it's only me who's talking, so I won't know when I'm losing your interest. Um, but on the other hand, if I can see your faces, I could read your facial expressions. So that will help me a lot in knowing कि अच्छा अब माहौल जो है वो किस लेवल पर जा रहा है, या फिर मुझे अब अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, सो दैट आई कैन गेट मोस्ट ऑफ द अटेंशन फॉर माय ऑडियंस। एक छोटी सी हमने एक्टिविटी रन की थी अपने एक there was a workshop that I was conducting, so it was an ice breaking session. मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन किया and then I asked people to kind of give their introductions. So एक एक वो बन गया था पैटर्न कि अच्छा पहले आप बताइए
बताएंगे उसके बाद आप बताएंगे उसके बाद आप बताएंगे उसके बाद आप बताएंगे, तो वो एक मोनोटनी आ गई थी, लोग उससे कंफर्टेबल हो गए थे, उनको पता था अच्छा उनकी बारी अब आएगी. So it was like I was losing interest. People, I could see on their faces कि अच्छा अभी तो हमारी बारी नहीं आनी है, अभी बाद में आनी है, so we won't listen to the other person who's talking. So what I did in that very moment, I changed my strategy. I was like नहीं, I broke the pattern. मैंने कहा कि नहीं जी, अब next ये बंदा नहीं बताएगा, बल्कि randomly किसी और बंदे को pick किया और उनसे बोला जी give your introduction. He was not prepared, so that kind of gave the rest of the audience एक वो कि यार कभी भी हमें भी pick किया जा सकता है, so just be attentive, right? Just be in your senses, so listen to what the other person is saying. So these are very small tactics that you do when you're giving a presentation. उसके लिए it's very important कि आप अपने जो audiences हैं, just keep an eye on them when they are losing interest. So if they are losing interest, come up with a strategy that can kind of make them curious either or make them attentive. So these are a couple of things that you can do. One way is आपकी presentation का जो style है, जो मैंने अभी आपको एक example दी, या फिर अपनी slides के through. अब right now, right here, the style that I'm using, it's not too conventional, it's different, right? uh, लोग दूसरी जो प्रोफेशनल्स आके वर्कशॉप्स करते हैं, टॉक्स करते हैं, दे आर यूजिंग प्रोफेशनल स्लाइड्स जो कि काफ़ी देखने में अपीलिंग होती हैं, बड़ी सोबर सी होती हैं, बट आई डोंट यूज दैट रियली ऑफन बिकॉज I want people to enjoy the slides as well while they're watching it, right? So just keep on working because it helps you engage your audiences. Keep on working on your presentation style, keep on working on your presentation slides, and you won't master it in one go. Never consider कि अच्छा आज हमने ये workshop ले लिया है या ये discussion हो गया तो next time हम we'll be doing like wonders. No, it comes with times. You have to keep on analyzing क्या चीज सही रही थी last presentation में, क्या नहीं सही रही थी, so that pick the points and create your own do's and don'ts list, which is very important. So again, that was engage your audience, and the last thing is practice it. It's very important. You will run out of uh, so you will run out of words if you don't practice it. Let me just share a little secret with you, though Samana is sitting here, but still. So last time I had a workshop, a 4-hour workshop with Code Girls on effective communication. ठीक है. So समाना फायजा ने मुझे जो है वो तकरीबन 1 महीना पहले बता दिया था कि this is a workshop that's coming up. It's going to be 4 hours और ये topic है आपका. Do you know what I did? Then so I there's one small initiative that I'm running in my organization that's called a brown bag session. Every Wednesday हम PMs का एक brown bag session करवाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो different topics discuss करते हैं. एक month की एक theme होती है और उस theme से related हम different topics जो हैं वो discuss कर रहे होते हैं. So what I did, मैंने उस पूरे month की theme ही effective communication रख ली. Or every week I used to do the activities that I was supposed to conduct in that workshop. So 4 हफ्ते पहले क्योंकि मुझे पता था तो मैंने 4 हफ्ते 4 एक्टिविटीज जो मुझे उस स्पेसिफिक वर्कशॉप में करानी थी मैंने हर हफ्ते. So my project managers were my lab rats, but I did practice to see what's going to be the outcome, to see how the people are going to react to it. So if you have that much time, practice it, rehearse your presentation. Uh, Unfortunately, today I did not have much time. I couldn't rehearse it, but and that's really unfortunate for me, to be honest. But every time, whenever I have time, I do rehearse my presentation. I do go through each and every slide over and over again. उसको मैं खुद पहले बैठ के देखती हूँ और मैं देखने के बाद ये अपने माइंड में बना रही होती हूँ कि ये पॉइंटर्स हैं जो जिस पे मुझे बात करनी है. वो पॉइंटर्स मैं अपने पास कहीं ना कहीं लिख लेती हूँ, बुलेट पॉइंट्स, एक कीवर्ड 2 कीवर्ड्स के, सो दैट आई रिमेम्बर व्हाट आई हैव टू से. अगर ये कर सकते हो बेस्ट है. इसके अलावा भी if you have friends, rehearse in front of your friends. The more you talk about it, the more you speak about it, the less fear you'll feel, the more confidence you'll feel.
ठीक है, तो when I stepped into that 4 hour workshop at Cold Girl, I was pretty confident because मैंने वो सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी परफॉर्म कर ली थी, लोगों के रिएक्शंस देख लिए थे, उन रिएक्शंस की बेसिस पे उन एक्टिविटीज को मैंने ट्वीक कर लिया था, अपनी प्रेजेंटेशन को मैं मजीद इन्हांस करती रही थी. So I was pretty confident कि this is how I want to proceed with each and every segment that's going to be there in the 4 hour workshop. So rehearsal is very important. अगर कोई नहीं है आपके पास, शीशे में देख के करें. हम बचपन में बच्चों को इस तरह से बोला करते थे कि जी शीशे में देख के रीडिंग किया करो, ये किया करो, और अब हम सोचते हैं कि यार इट्स स्टूपिड. नो, इट्स नॉट. इट्स वेरी हेल्पफुल. रिहर्सल से, प्रैक्टिस करने से, इट हेल्प्स यू मास्टर the words, the choice of words that you're going to use in front of your judges or in front of your audiences. Kyunki you have just a limited time duration, let's say 15 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour, to kind of sum up the entire thing that you have researched for weeks. So imagine those that specific time slot, how important that is. Obviously आप लोगों को information से bombarded नहीं कर सकते. So you have to be very picky about your words. You have to be very concise about the information that you're giving in. And how you can do it is by practicing. अच्छा, ये वाली चीज सही है, ये बतानी चाहिए, ये नहीं बतानी चाहिए, ये मुझे याद नहीं था, तो लेट्स से इसको लिख लेते हैं कहीं पर. A lot of such things come up. और यकीन करेंगे जब ये आप करेंगे तो आपका वो जो ऑडियंस वाला फेयर था या जो कॉन्फिडेंस वाला इशू था वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा. Am I audible so far? Yeah, you are audible, ma'am. Perfect. Um, so yeah, this if you can follow these just 4 simple steps. दो के अगर मैं अभी आपको दिखाना शुरू करूँ तो देयर लाइक 17-18 आर्टिकल्स जो कि मैंने खोल के रखे हुए थे अपने पास, जिसमें there was a lot of information which I wanted to give, but I was like, no, this time we'll keep it simple. We'll go by the basics. क्योंकि if you just follow these basics, trust me, काफी चीजें जो है ना वो आप फिर with time enhance करते रहते हो. So हर चीज को अपनी जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दो के क्राइटेरियाज में जरूर डिवाइड करना. एक must have and एक good to have. The must have items, you have to master it. Good to have, you keep on adding with time. As much time as you get, and as you grow further, you keep on adding the good to have items. But the must have को जब तक आप cover नहीं करोगे, आप कितना ही good to have डालते रहो, um, you won't get the results that you want. ठीक है, so these are like 4 must have items that you should follow before you are going for any presentation. Map your ideas, keep it simple, engage your audience, and keep practicing it before the D-Day. On that note, I will be moving forward. So here is my secret recipe. So how I give presentations. Yeah, how I master this entire art of giving presentations or public speaking. So there are like 3 activities that I do usually. जी नेहा. मैम मेरा सवाल ये था कि हम प्रेजेंटेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हैकाथॉन कंपटीशन है ना, उसमें कोई प्रेजेंट तो नहीं करनी हमें कोई चीज? ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है. अच्छा चलो सही है. हैकाथॉन में आपको करना क्या है? अपना प्रोजेक्ट जजेस को एक्सप्लेन करना है, राइट? एक्सप्लेन करना है या वहां पे बनाना है? वहां पे ऑब्वियसली जब आप बनाओगे तो जजेस जब आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे या कोई क्वेश्चन करेंगे, तो यू विल बी काइंड ऑफ. तो वो तो क्विक आंसर होगा ना, वो वहां पे तो हम उसकी माइंड मैप नहीं कर सकते हैं. तो क्विक आंसर्स होंगे हमारे क्वेश्चन के. Okay, चलो. may I jump in a little या bit, श्योर, Sanam? या Okay, श्योर, या some of श्योर. the participants over here might be the ones जिन्होंने competition के लिए sign up किया था, और हमने जो link था वो सबके साथ share किया हुआ था जितने भी हमारे अभी तक TechFest थे.
participants हैं and it was open. So it's not like कि hackathon participants को किसी ने force किया था या it was not like कि किसी के लिए भी mandatory नहीं था, लेकिन सबके लिए open था. So some of the participants जो competition के लिए उनके mind में ये होगा कि how is this helpful for us? You might be thinking कि presentation skills उस वक्त आपके लिए इतनी helpful नहीं होंगी, लेकिन I'm sure that this is going to come in handy if you just keep these points in mind. ये आपकी जो पूरी आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना रहे हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें माइंडफुल रहें अगर आप, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. सेकेंडली, सनम आपको एक्सप्लेन करेंगी हाउ दिस इज हेल्पफुल एंड एवरीथिंग. सेकेंडली, जो हैकाथॉन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन एक्चुअली होगी. दे विल बी पिचिंग देयर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. सो कीप इन माइंड कि ये दिस इज ऑल गोइंग टू कम इन वेरी हैंडी टू यू. थैंक यू सनम. आई विल लेट यू टॉक नाउ. थैंक यू. इस नोट पे बेटा आपका नाम क्या था? सॉरी. नेहा. 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 नेहा, there is a Yes. friend of mine. अभी शायद कुछ दिन पहले की बात है. So we were just having tea, and he mentioned he's into research and everything. So he keeps on exploring new things on internet and just doing a lot of different stuff. So he just asked me one quick question. He was like, "Yeah, you know what? I was looking at this video. उस वीडियो में था ये कि जी जैसे हमारे यहाँ CSS के एग्जाम्स होते हैं वैसे ही इंडिया में भी कुछ एग्जाम्स हैं इसी तरह के. तो आर्मी रिलेटेड जब आप किसी उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हो एंड देन वहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी लेवल हेडेड आंसर्स आपको उसी वक्त देन एंड देयर ऑन स्पॉट दिया जाता है. तो ही मेंशन कि मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें इसी तरह के सेशंस के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे या फिर वो एक्चुअल सेशन था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या द क्वेश्चन वाज के एक लड़के से पूछा था, वहाँ सारे जर्नल बैठे हुए थे, उससे पूछा कि यार तुम्हें आना है इस फील्ड में, क्लियर करना है. उसने कहा हाँ जी करना है. यार ठीक है यार, तो फिर अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो. तो अच्छा, ही वाज लाइक व्हाट वुड बी योर आंसर? I actually heard that before. मैंने सुना हुआ है पहले भी. एग्जैक्टली. तो इस तरह की चीजें जो आपके बिल्कुल ऑन स्पॉट होती हैं. इनफैक्ट अगर आपने शार्क टैंक्स देखा हो, अच्छा जिन लोगों ने नहीं सुना हुआ वो लोग बता दें क्या क्या जवाब होगा. That was funny and that was very great. Yeah, normal Not बंदा एंग्री हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा. exactly वो जो है ना अपने अपने उस पे ले लेगा यार कि यार ये क्या बकवास है और नहीं जी हम नहीं करते. लेकिन the way that guy answered The person was, tackle that trouble. Yeah. with so those are couple of skills जो कि आपको आती हैं by confidence. So Yeah. how this is related now? Let me just connect the dot. So right now what I'm doing, I'm debriefing for whatever I was just telling you guys पहले. So I'm just debriefing about it कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे या हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे थे. देखो इस तरह की जो चीजें होती हैं मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में, देखो उनसे उनसे जो सवालात किए जाते हैं वो ऑन द स्पॉट बड़े कोई विटी आंसर्स भी दे रहे होते हैं, कुछ बड़े नॉलेजेबल आंसर्स दे रहे होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज आप तब होते हो जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता. कंफ्यूज आप जब होते हो जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो आइडिया है या फिर जिस हवाले से आपसे बात की जा रही है, यू डोंट हैव काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, उस चीज के ऊपर आपको कमांड नहीं है, तो आप उस तरह के जवाब नहीं दे पाते. या फिर आप ये सोचते रह जाते हो. हम में से अगर कोई मेरी तरह का होता है, मैं तो भाई कहती हूँ यार मैं उस वक्त ये जवाब दे सकती थी लेकिन मैंने ये जवाब नहीं दिया, वो मुझे बाद में बैठ के याद आ रहा होता है. क्योंकि हम अपनी जो छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, हम उनको पॉलिश नहीं करते. ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना आपकी, ये बात करना, ये पब्लिक स्पीकिंग करना, या फिर ये to have a confidence, all these soft skills, consider them as a muscle. तो जब if anyone is into weight loss,
या फिर जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, अगर आप लोगों में से कोई है तो क्या करते हो, जिम जाते हो, वॉक करते हो, डाइट करते हो, टू मेक श्योर द मसल बिल्ड्स, टू मेक श्योर कि भाई आपकी बॉडी टोन रहे, तो you keep on working on it. So this is how your soft skills are as well. So your confidence, the way you react to or respond to certain things, the way you face certain challenges, all those things, it comes with practice. So even if I talk about presentations, just presentations, so if you just keep generalize the entire thing, अगर मैं तुमसे बात करूं कि यार अपने ideas को map करो so that you exactly know what are included, what is included, what's not included. वो आइडिया जरूरी नहीं है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का ही आइडिया हो, वो आइडिया जरूरी नहीं है कि जिस चीज पे आप काम कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन है वो ही हो, वो आइडिया कुछ भी हो सकता है। आप नॉर्मल लाइफ में आपका अपना ओपिनियन भी वो आइडिया हो सकता है। सही है, आप रैंडम लोगों दोस्तों से बात कर रहे हो, उन्होंने आपसे एक एक कल ही मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, उस पे बात हुई कि जी ट्रांसजेंडर्स को जो है वो उनके राइट्स का बिल नहीं दिया गया, तो you don't you don't know about it, you don't have any opinion about it, you can't say anything about it. So अपने opinions को back करने के लिए you need to have the bullet points. Having the bullet points is mapping your idea. So if you want to generalize it that way. If you want to be confident on what you're saying to anyone, if you want to be confident on presenting, or if you want to be confident on delivering your normal communication, तो आपके जो words हैं, जो आपके ideas हैं, वो इतने solid हों, उसके लिए जरूरी है आप उसको पहले map करके अपने दिमाग में रखो, वरना आप यही सोचते रह जाओगे कि यार मैं उस वक्त ये भी बोल सकती थी। Same, अपने audiences को जानना, जो हमने एक और बात की कि know your audience, engage your audience. May it be a presentation, may it be normal communication that you and I are having. If you can't engage me in a normal communication, day-to-day communication, तो आपका मैसेज मुझ तक डिलीवर हुआ ही नहीं, आपकी बात या आपका पर्सपेक्टिव या आपका आइडिया मैंने समझा ही नहीं, सो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई ही नहीं। सो the idea of telling all those things, implement these things, plug and play all these things into anything, and it will come handy, it will be fruitful. So that's what I wanted to explain, कि अगर आप ये समझते हो कि आपके हैकाथॉन में आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, obviously हैकाथॉन के बारे में समाना is the right person to give you the brief on, but consider these soft skills or consider these items as the checklist for the communication, और वो कैसी भी कम्युनिकेशन हो सकती है, प्रोफेशनल, पर्सनल, फ्रेंड्स के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, हस्बैंड वाइफ के बीच की कोई भी कम्युनिकेशन। नो योर ऑडियंस इज अ मस्ट, engage your audience is a must. Mapping what you want to say, at least knowing what you want to say is a must. Practicing items before delivering some important news, आप अपने इनफैक्ट अपने जहन में कई बार सोचते हो जब आपको कोई न्यूज़ ब्रेक करनी होती है अपने पेरेंट्स को, आप उस बारे में सोचते हो अच्छा मैं ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बताना है, ये बताना है, अच्छा यूं करना है, वो करना है। मे बी आप शीशे के आगे खड़े होकर नहीं बात कर रहे हो, लेकिन अपने दिमाग में आप उसकी रिहर्सल करते हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है, उसका ये जवाब मैंने देना है, सो यू डू इट। एंड इफ यू डोंट तो आप एट टाइम्स आप क्लूलेस हो जाते हो। So consider these soft skills which we are talking about. If it doesn't really directly connected with the hackathon, consider it as a soft skill that you will learn for the rest of your life. Okay, thanks. You're welcome. Okay, so on that note, there are 3 secret recipes जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरे लिए ना स्टोरी टेलिंग बड़ी क्रिटिकल है। नॉर्मल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी कोई बात स्टार्ट होती है तो सो most of the people, according to a research, it's been said कि people remember things to which the story, a certain story is connected. ठीक है, अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट दे दूंगी तो वो स्टेटमेंट शायद वहीं के वहीं उस वक्त याद होगी, बाद में जाके people will forget
people have the tendency to forget things. Lekin if there's some story associated with it, there's some emotional attachment to what you are delivering, what you in your communication, that I will remember it. So last time when we did a workshop with Code Girls, हमने लोगों से कहा था कि यार tell me a story. So I told them one story अपनी, एक mishap हुआ था, how I came up, how I um, went into it, what was the struggle, what was the end result. So I kind of gave them a little background of myself to build the trust. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उनमें से कोई लोग यहाँ पर हैं तो उनको वो स्टोरी कहीं ना कहीं याद होगी कि यू नो Yes, ma'am. इस तरह से, ठीक है ना? तो दैट्स हाउ यू मेक पीपल रिमेम्बर व्हाट यू आर सेइंग. So it's in normal life communication as well, in a presentation as well. You should have a story behind whatever you're doing. So if in a hackathon you're working on a project, you're building something, there should be a story behind. When you go in a professional environment, or if you're working in a professional environment, when a client comes with a project idea कि यार ये मुझे बनवाना है, he has a story behind it, यार ये मुझे इसलिए बनवाना है. तो वो लोग जो अपने आइडियाज को, अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंसेस को किसी स्टोरी से कनेक्ट कर देते हैं, उनकी ऑडियंसेस वो चीज याद रखती है. सो दैट्स व्हाट आई रियली फॉलो एवरी टाइम. जैसे अभी इसी डिस्कशन में मैंने आपको 2-3 स्टोरीज अपने फ्रेंड्स की, अपने जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं उसके बारे में बताई हैं. सो दैट्स हाउ यू रिमेम्बर स्टफ. So storytelling is very critical whenever you're communicating, whenever you're presenting. So you find how you practice it. कैसे करना, कैसे मैं बेसिकली ऐसे करती थी बचपन में, क्योंकि मुझे राइटिंग का भी बड़ा शौक था. तो आई यूज्ड टू पिक अप वन इमेज. उस वक्त हमारे ज़माने में इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता था. जब हम 10th में आए थे तब इंटरनेट बहुत आम हुआ था यहाँ पर. नाइन्थ में आए थे तब. लेकिन उससे पहले इतना नहीं होता था. तो हम जो बुक्स, रीडिंग बुक्स वगैरह होती थी, वहाँ से एक स्टोरी, एक कोई भी तस्वीर उठाई, उस तस्वीर के ऊपर उठा के आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग अपने दिमाग से कुछ भी. सो दैट्स हाउ आई बिकेम अ राइटर एज वेल. इसी तरह मैंने राइटिंग सीखी, इसी तरह मैंने स्टोरीज बनाना, स्टोरीज कनेक्ट करना सीखी. इसी तरह अब मैं अपनी वही वाली चीज जो मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, मैं उसको उसमें अब मास्टर इन अ सेंस कि व्हेन आई एम गिविंग अ पब्लिक स्पीकिंग सेशंस, आई कैन कनेक्ट पीपल विद माय स्टोरीज. सो बट हाउ इट स्टार्टेड, हाउ आई प्रैक्टिस इट, एक कोई भी तस्वीर उठाओ, उसके बारे में मतलब बताना शुरू करो. And that build up a story behind it. Once you have that creativity in you, आपको फिर वो वाली जो एक शिकायत होती है ना कि यार मैं उस वक्त ये बोल देती, वो बोल देती, वो वाला जो मसल है ना आपका, वो थोड़ा सा बिल्डअप, टोन अप होना शुरू होगा. So that's one way of doing it. That's what I used to do. That's what I tell my 3-year-old अभी भी कि भाई उसको I give her books जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं, एंड शी मेक्स अप स्टोरीज ऑन हर ओन. अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये सब छोटा सा मसला है, अभी बिल्ड होना शुरू होगा होगा होगा. व्हेन शी विल बी यंग इनफ और शी विल बी गोइंग टॉकिंग टू पीपल, तो वो मसल इतना टोन हो चुका होगा कि शी कैन यूज इट. The second thing that I used to do, and I still do it sometimes, I record myself. ठीक है? तो because I have this, पता नहीं अजीब सा मेरे खप्त है दिमाग में, I need to know how I sound when I am talking. तो मैं उसके लिए करती ये हूँ कि मैं 1 मिनट का टाइमर लगा के किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करती हूँ एंड आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, सो दैट मुझे ये अंदाजा हो कि मेरी आवाज़ सुनने में कैसी है, मुझे कहाँ पे टोन डाउन करनी है, कहाँ पे टोन को शार्प करना है, कहाँ पे मुझे जो है वो किस लहजे में बात करनी है. बिकॉज योर टोन ऑफ वॉइस is has a lasting impact. तो अगर मैं कोई बात बड़ी पते की बात अगर किसी खराब सी बड़ी चीखती हुई टोन में कर रही होंगी ना, तो यूल बी लाइक यार यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट काम डाउन मैन, किस तरह बात कर रहे हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बात कर रहे हो आपका टोन कैसा है,
you work on it. So I keep on recording myself. 1 minute की recording बना के अपनी, and I used to listen to it कि अच्छा मैं बोलते हुए लग कैसे रही हूँ, मुझे कहाँ पे चीज़ों को फिक्स करना चाहिए जो कि कानों को बुरा ना लगे, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा ये जुमला ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था. So these are a couple of things that I used to practice, and that's how I can say कि अच्छा भी मैं public speaking sessions दे सकती हूँ. लेकिन in every session I learned more and more and more. इनफैक्ट मैं अभी भी, हमारी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जब आती हैं तो आई गो एंड चेक द रिकॉर्डिंग्स. अच्छा मैंने मीटिंग्स कंडक्ट कैसे की, डेली मीटिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, प्रेजेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल कम्युनिकेशन की मीटिंग्स थी वो हमारी. उनको मैं चेक करती हूँ, अच्छा मेरी टोन कैसी थी, कहाँ कौन सी बात हुई है, कब मैंने कैसे रिएक्ट किया. दैट रियली हेल्प मी इम्प्रूव इन माई कम्युनिकेशंस, in my confidence as well. And the third thing is mega commercial. So this is one crazy thing that I do. ये मैं लोगों से भी करवाती हूँ जब मैं स्पेशली जब मैं effective communication related workshops करती हूँ. So I let people create or reenact on small scenarios. क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है. ठीक है. Or when you create ads and record yourself while reenacting on something, you know कि अच्छा आपका body posture क्या था, आपके hand gestures क्या थे, आप जब किसी से बात कर रहे थे तो how do you actually look. बहुत सारे लोगों को आदत होती है बात करते करते वो जो है वो अपने सर खुजाने लग जाते हैं, बिला वजह आदत है. या फिर बहुत सारे लोगों को आदत होती है वो बहुत हाथ चला चला के बात करते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े मोनोटोनस उनकी जो बात करने का तरीका होता है बड़ा मोनोटोनस होता है, सामने वाले को नींद आने लग जाती है. तो व्हेन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ डूइंग ऑल दिस, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता. इनफैक्ट मेरी एक आदत है, मैं एक फिलर यूज करती हूँ काइंड ऑफ. अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया, लेकिन मैंने काइंड ऑफ, मैं खुद अपने आप का अपने जहन में काउंटर लगाया हुआ है कि मैं काइंड ऑफ बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. स्लाइड फिफ्थ से लेके 7 तक मैंने काइंड ऑफ कोई 8-9 दफा यूज किया है. सो आई ट्रेन माई माइंड, मैं उसको अपने माइंड को सिग्नल देती रहती हूँ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अ लॉट, आई हैव टू कट इट ऑफ, कुछ और यूज करना है, कुछ और यूज करना है. तो हाउ यू डू इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आप कर गलत क्या रहे हो बात करते में. वो चीज आती कैसे है, व्हेन यू see yourself doing that stuff from a third person perspective. So this is what I used to do. This is what I do as well, and this is what I encourage people to do. थोड़ी सी crazy चीजें लग रही होंगी शायद आप लोगों को, लेकिन trust me, if any one of you wants to uh, go to a certain position, क्योंकि अभी आपकी करियर का स्टार्ट है, आप शायद समझते हो कि आप कोडर करो, कोडिंग करोगे, डेवलपर बनोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर स्पेंडिंग सर्टेन टाइम पीरियड इन योर करियर, उसके बाद आपने एक लीडरशिप पोजीशन पे आना ही होता है. आप चाहो या ना चाहो, आपने उस लीडरशिप रोल में लोगों से बात करनी ही होती है. प्रेजेंटेशंस नहीं, बल्कि ये पब्लिक टॉक्स जो हैं ये आपने देनी ही होती हैं. आप, आपकी टीम 200-300 लोगों की जो टीम है, जो आपको रिपोर्ट करते हैं जो लोग, उनके साथ बैठ के अगर आपने बात करनी है, तो ये छोटी 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 चीजें जो एज अ डेवलपर हमें लगता है कि यार ये कहाँ काम आएंगी, ये तो बस फजूल सी चीज है. व्हेन यूल गो टू दैट लीडरशिप पोजीशन देन यूल नो. कितने सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि दे आर चीताज इन देयर कोडिंग, और क्यूए के लोग हैं, चीते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि उनकी पब्लिक डीलिंग स्किल्स, interpersonal skills are not good, they are not given the leadership positions. आपको leadership position पे सिर्फ वो लोग नजर आएंगे who are outspoken, who can talk to people, who can deal with people. So how you do that? By following these things. So this is my secret recipe. That's what I do. I know it may sound a little crazy, but it really helped me. I'm not saying that it's 100% mantra that will help you as well, but at least come up with something of your own. Start doing this. If this won't work, you'll have something else in your mind that will work for you. So yeah, on that note, I am moving forward. अब तक हमने जितनी भी बात की, बहुत सारी डिस्कशंस की हैं अभी हमने, उसमें से ये 3 चीजें यार
जरूर जहन में रखना. May it be hackathon, may it be professional career, may it be college, university, wherever the communication is happening. Remember these three things. Know your audience. आप अपने दोस्त से जो बात कर सकते हो, ओके, जी सबिका. Ma'am, I have a question. Like whenever we talk to foreign international clients, they speak so fast that sometimes it becomes difficult to understand what are they trying to convey. So, are there any tips to do this? To do this Yes, better? practice. I अच्छा do मुझे practice a बताओ. lot, but they actually speak so fast. It's like they are commenting in a match or what? अच्छा मेरी मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो. Yeah. मेरी अंग्रेजी सो फार जितनी भी मैंने बोली टूटी फूटी, उसको रेट Yeah. करोगी तो क्या रेट करोगी? I guess 7 in 7. comparison to them. सही है. इन कंपैरिजन टू देम सही है. अग्रीड. 7. 7. ये जो मेरी अभी ये लैंग्वेज स्किल है, ये अब अगर तुम 7 रेट करती हो तो ट्रस्ट मी, आज से 4 साल पहले ये लैंग्वेज स्किल 2 थी. I आई वॉज see. वेरी 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 बैड इन इंग्लिश. बहुत ही नॉर्मल स्कूलिंग हुई है मेरी. केयू से पढ़ा हुआ है मैंने, वहां पर भी कोई इतनी खास ग्रूमिंग वगैरह होती नहीं है, जो सीधी बात है. ठीक है. प्रेजेंटेशंस वगैरह का वहाँ पे है कॉन्सेप्ट, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है जितना अगर आप कंपेयर करो दूसरी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज से. तो दैट्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. और उसके बाद व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, आईटी इंडस्ट्री में, I was working for these 14 years. I've been working for US based clients, and trust me, I feel the same. मुझे नहीं समझ आता था वो क्या बात कर रहे हैं. Yeah. तो उसके लिए what I did is I started watching movies in English. Netflix, आज की डेट में भी मैं ये करती हूँ कि मैं इंग्लिश सीरियल्स ज्यादा देखती हूँ, so that वो मेरी लर्निंग स्किल्स अब आप ट्रेन करते हो. योर ब्रेन इज बेसिकली अ मसल, यू ट्रेन योर ब्रेन, राइट? तो ये फौरन नहीं होगा. ये नहीं कहूंगी कि ये इसका इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि आज कल परसों में ठीक हो जाए. इट विल टेक टाइम. But in the meantime, what you'll do, you'll keep on listening to English songs. You keep, if you're not into songs, you keep on listening to English movies. If you're not into movies, then keep on listening to English, anything that's documentary, commentary, anything, and try to understand. उसका अगर 50% भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, उस पे फिर और आगे बढ़ो. 60% आना शुरू होगा. When you keep on practicing it, you'll get there. Because there is a But huge difference of accent as well, you know that. yes, So that's yes, yes. why it gets difficult. मैं पता है और क्या करती हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग सिर्फ सुन रही होती हूँ ना, तो मैं, अच्छा ये बड़ा सीक्रेट है, इसको किसी को बताना नहीं. इफ माय फ्रेंड्स नो ना, तो दे मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. लेकिन जब भी कोई अंग्रेजी गाना मैं सुनती हूँ तो मैं सामने ना लिरिक्स खोल के रखती हूँ, क्योंकि समझ तो आती नहीं है, इतनी वो तेजी में बात हो रही होती है. तो वो मैं लिरिक्स पढ़ती रहती हूँ, This अच्छा इसका happens. मतलब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है. तो दैट वे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है. बगैर पढ़े भी अब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं. तो इट विल टेक टाइम, बट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स. Okay, thank you so much. You're welcome. अच्छा जी, तो three things to remember whenever you're communicating, may it be in hackathon, may it be in personal, professional life. Um, know your audience. Who is your audience? It's very important. किससे क्या बात करनी है, किस वक्त करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है. आप अगर कोई ऐसी चीज किसी ऐसे बंदे से बोल दोगे जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो यू, sorry my friend, but you are into a danger zone, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो सही से कन्वे नहीं हुआ है. So knowing your audience is a very important aspect. Present yourself, not just the idea. So again, जब आप किसी कहीं पर भी होते हो, आपका idea is your presentation, how, what you are, what your beliefs are, what you are capable of. ठीक है. अच्छा, so don't read these things. मैं अभी से बता रही हूँ, ये प्लेस होल्डर्स हैं.
I forgot to take it off. Like I mentioned कि ये presentation मैंने आखिर में बनाई थी. Sorry Samana. But yeah. So coming back to the point, present yourself, not just the idea. So you have to be physically presentable. You have to be well versed, confident. कैसे आएगा? Again, practice से. Before, अगर कोई ऐसा event है जहाँ पे जाके बात करनी है, तो before going to that event, talk to different people about the same thing, about your idea. The more you talk about it, the more words, the more content you'll have in your brain. And once the big day comes in, you'll be able to respond in a better way. तो आप अपने जब भी अपने हैकाथॉन में भी if you're developing or working on a project जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो just be sure about it कि भाई ये मैं करना है, ये इस तरह से होगा, ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसकी बिगर पिक्चर क्या है. तो सिर्फ यही नहीं कि आपने अपना आइडिया जाके पिच कर दिया कि मैं ये कर रही हूँ. नो, यू हैव टू हैव very strong story behind it so that your judge can relate, so that your the person who's the other end, who's at the receiving end, can understand where you're coming from. So this is very important. And action speaks louder than word. Your body language, it is very important, to be honest. आप कितनी ही अच्छी बात कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी वर्ड्स का साथ नहीं दे रही, आप कोई एक जेस्चर है जो बार बार कर रहे हो, लेट्स से अपने हाथों को जो है ना वो हाथों से खेल रहे हो, या फिर अपने हाथ आपने अपनी पॉकेट में डाले हुए हैं, या फिर आपके आईज जो हैं वो मतलब अभी मैं आई एम नॉट, लेट मी ट्राई एंड ओपन माय कैमरा. बट व्हेन यू आर टॉकिंग एंड देन यू आर लाइक इस तरह करके आप लोगों से बात करते हो जिससे आप उनकी, यू आर नॉट looking into their eyes when you're talking, so people get different opinions about you. वो आपके words पे नहीं बल्कि आपके actions पे ज़्यादा ध्यान होता है when you are talking to people. So make sure that when you are talking to someone, presenting your idea, giving a presentation, your body language should be stable, should be friendly, so that anyone can come in and talk to you, right? So this is these three things to remember. That on that note, I know I am over the time. One more important thing, respect the time boundaries. I should have been completed before 2 minutes, but वो हमारा इंटरनेट की लैगिंग की वजह से थोड़े से मसले आ गए थे. So on that note, I am wrapping this up. I hope कि अगर 100% ना सही लेकिन at least 20% भी आपको यहाँ से कुछ helpful मिला हो, so just do let me know. Give me your feedback. Ask me any question if you have, and I'll be happy to answer. मैम, जिस तरह आपने ऑडियंस के बारे में बात की कि हमें ऑडियंस को जानना होता है कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, लेकिन आपने अभी पहले बात की कि हमें जो प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है उसके लिए पहले हमें अपना माइंड मैप बनाना होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनानी होती है, मतलब पहले से हम अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं. तो Yes. हमें ये पता कैसे चलेगा कि अगला बंदा जो है वो किस तरह का है, उसके सामने कैसी चीज प्रेजेंट करनी है और क्या चीज प्रेजेंट करनी है, लाइक अच्छा जी. इस चीज में. तो बिल्कुल मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ. अच्छा, तो अगर हम सिर्फ हैकाथॉन की बात करें, ठीक है, तो अभी जो तुम्हारा ऑडियंस होगा ना, अगर मैं इसको रिलेटेबल रखूं, मैं अभी इसको जनरलाइज नहीं कर रही, तो तुम्हारा जो ऑडियंस होगा ना वो तुम्हारे जजेस होंगे जो कि उसी इंडस्ट्री से होंगे जिस इंडस्ट्री से आप हो, आईटी. तो दैट्स द बैकग्राउंड, राइट? You know a little about it. Then you would also know if they are the judges, then obviously they have the experience, professional experience. This is another profiling that you have. Apart from that, you can ask around कि who is the judge. Maybe you can follow Code Girls का page जहाँ पे judges के announcement हो रही है. So you go ahead and do some research on LinkedIn कि what the credentials of that person are. So that way you have a profile of, obviously वो बंदा personally कैसा है, that's what we don't want to know, but professionally who we are talking to, we need to know. ठीक है, तो इस तरह की आप प्रोफाइलिंग करके रखते हो. जैसे अभी मुझे आने से पहले ये पता था कि भाई यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं, दे विल बी मोस्टली पीपल हु आर ईदर स्टूडेंट्स
और स्टार्टिंग देयर करियर और मिड लेवल रिसोर्सेज में भी आप बड़े एक्सपीरियंस भी हो गए, लेकिन एटलीस्ट पीपल फ्रॉम आईटी. सो आई हैड लाइक अ ब्रीफ kind of profiling of my audiences. So that's what you do. Whenever you are talking, you try and create a profile of your audience. I hope that answers your question. यस मैम. मैम, वन मोर क्वेश्चन कि अगर ऑडियंस में से कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगी? लाइक आप कोई बिल्कुल. अच्छा, हमारी ना अभी रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले हमारे ऑफिस वालों ने ना एक ट्रेनिंग करवाई थी हमारी, ट्रेन द ट्रेनर के नाम से. प्रोफेशनल ट्रेनर्स आए थे वहां पे, उन्होंने हमारी उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई. वैसे जितनी बातें थी somehow I was following, लेकिन कुछ चीजें मैंने नई सीखी. उसमें से एक बड़ी नई चीज मैंने सीखी कि जब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो आप उसी की तरफ सारी अटेंशन ले जाते हो. आपके तो लो जी, आप बताओ आपका क्या, क्योंकि दैट पर्सन वाज डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो आप अपनी और अपने सारे ऑडियंसेस की जो अटेंशन है वो उस बंदे की तरफ ले जाते हो, तो दैट पर्सन कैन बिकम अ लिटिल अटेंटिव. और नेक्स्ट टाइम वो करने से पहले जो है ना, थोड़ा सा सोचेगा, अच्छा यार फिर से मुझे ना पकड़ ले, मुझसे ना सवाल पूछ ले, या फिर मुझे ना एंगेज कर ले. सो यू डू दिस इज वन स्मॉल ट्रिक. Another small thing is कि when you get into discussion जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार सामने वाला सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपसे बिला वजह के सवाल पूछ रहा है, सो यू जस्ट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट. सिंग नहीं अड़ाने. सिंग अड़ाना होता है ना कि भाई आप जो दो गाय भैंसे आपस में लड़ रहे होते हैं, बुल्स लड़ रहे होते हैं, दोनों के सिंग अड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, वो नहीं करना. इफ दे आर सेइंग समथिंग, लेट इट बी. आई मीन आप कहेंगे हाँ जी, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस आफ्टर द प्रेजेंटेशन, अभी के लिए हम लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद समथिंग एल्स. राइट? सो यू काइंड ऑफ avoid getting into arguments. अगर कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन है, अगर कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन है कि कोई बात करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप सभी की अटेंशन उसकी तरफ ले जाओ ताकि वो बंदा खुद ही अपने अंदर हो जाए, अच्छा आई एम बीइंग नोटिस्ड. So these are small tricks that you do when you're giving the presentations or public speaking sessions. थैंक यू मैम. You're welcome. Listen, Any other? अच्छी टिप थी बहुत ये वाली. और मेरा Mhm. सवाल ये था कि आपका आउटलुक जो होता है, मतलब कि आपका ड्रेसिंग सेंस वो इम्पोर्टेंट करता है कम्युनिकेशन स्किल्स में? Like I said, don't just present your idea, present yourself as well. Yes, it matters a lot. So irrespective of what attire you are in, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ वेस्टर्न ही पहना हो तभी आप अपीलिंग लगोगे, या आपने कुछ बहुत ही ईस्टर्न पहना हो तभी आप अपीलिंग लगोगे. वट एवर यू आर वेयरिंग, यू शुड बी एबल टू कैरी योर सेल्फ. ठीक है? बड़ा एक अजीब सी लाइन है ये, जो बड़ा टाइम बाद मुझे समझ आई है. सो आई एम लिटिल, I'm not chubby, I'm fat. Just let's just accept this. So I'm I am fat. So yeah. So there are certain dresses जो कि मुझ पे अच्छे लगते हैं, जो और कुछ मुझ पे अच्छे नहीं लगते. But whatever I'm wearing, once I'm wearing it, I try to carry myself in that. सही है, पहन लिया, अब कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना, बस यही है जो भी है. लेकिन योर ड्रेसिंग सेंस, योर व्हाट यू आर वेयरिंग, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, दैट्स how the person perceives you first in the first glance. और उसके बाद जब वो आपसे बात करता है, तो फिर वो आपसे इंस्पायर है नहीं इंस्पायर है जो भी है, वो फर्दर जो आपके perceptions हैं वो बाद में बनते हैं. लेकिन the first thing that a person looks into you is your physical appearance. So yes, it does matter. ओके, थैंक्स. You're welcome. Any other question? All right, so I'll take it as a no. Thank you so much, everyone, for your time. Thanks a lot, Samana, for having me. And I hope that it was a not, if not good, but a better session. And I really want to wish you all of you best of luck for the upcoming hackathon. And you can reach me out if you have any question via email, or I'm also available on LinkedIn. So yeah, thank you. Thank you Over so to you, much, Samana. Sanam. Thank you so much, Sanam, for taking your time out और हमारे लिए इतना सारा अपने टाइम दिया, तवज्जो दी. And this is going to be, I think someone's mic has. Angela, can you mute yourself? Okay. Thank you, Sanam.
It was really nice having you, and I'm sure these tips and all the little lessons, these little nuggets of advice that you've left for us are going to help us all somewhere or the other. कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में रह जाती हैं और फिर वो बाद में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आती हैं. So although it's a conscious effort as well as your intuitive ability to learn and then unlearn these True. things. True. Right. Very So true. on that note, and thank you everyone for taking your time out. I hope all the participants have a great experience at the Tech Fest. Wish you all the best. There are 3 more workshops on different other topics outlined, और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि वो कब शेड्यूल्ड है. हैकाथॉन के बारे में there will be a proper debrief session. There will be an info session towards the event. छोटे इवेंट से पहले हम ऑनलाइन करेंगे, उसके अंदर फिर हम बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप. यू कैन राइट टू अस एंड वील आंसर. आप इस वीडियो के नीचे जो हम लाइव जा रहे हैं इसके नीचे भी आप कमेंट करके टैग करके हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं. ठीक है. A very good night, a very good evening to all of you. Stay blessed. जहाँ भी हैं खुश रहें, तरक्की करते रहें. अल्लाह हाफिज़. Amin. Allah Hafiz.